Hello friends, I am Manisha and I welcome you to Excel and Exceed Education. Today we will be discussing something that is of great importance और ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में रेयर तो आता है बट जब भी आता है तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता है, राइट? दैट इज आर्टिकल्स, जो ज़्यादातर आप लोग बिलीव करते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हमारे लिए क्रिएट कर देता है. सो विल सी टू दिस थिंग. ओके, ऑल्सो हम आर्टिकल्स के बारे में और भी बातें करेंगे बट आज के लिए जो हमने सिलेक्ट किया है आपको समझाने के लिए, आपसे डिस्कस करने के लिए, इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. बेसिकली जीरो आर्टिकल नाम दिया जाता है इनको. कहा जाता है ऐसे जगह जहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है. बहुत से ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो हम लिखते हैं और जहां पर आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल लाइक ए और एन को प्लेस कर दिया जाता है जबकि उनका वहां पर कोई भी यूसेज नहीं होता है. ऑल्सो आप देखेंगे काफी जगह पर डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, जबकि वहां पर वो आर्टिकल भी इस्तेमाल नहीं होता है. सो विल डिस्कस फ्यू ऑफ थिंग्स टुडे एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. Okay, the first point that we'll discuss for omission of articles is basically whenever you talk about languages, right? Like you say English, you take Sanskrit, you take French, any Malayalam, any language you take. But the point is with languages, you do not use any article. Also, when it comes to subjects like history, maths, English, you don't use any subject. Also, when it comes to sports or games, you don't place any article there. For example, I'll write it here. First point is omission of articles. Let me write it here. Okay, so we'll be discussing. We are discussing this. So if I say, like, I must take it with respect to subject, language, and you can say games and sports, right? So you don't place any article whenever we talk about subjects, languages, games and sports. So you'll not be using any article like that. For example, if I say that I am a student of English. So English is a subject. You can write mathematics, right? You can write physics, you can write economics, you can write geography, biology, you can write anything you can use. But here in this place there's no usage of article. You cannot use any article here. सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज लिख लीजिए आप यहाँ पर, आप यहाँ किसी गेम या स्पोर्ट का नाम लिख दीजिए, बट स्टिल देयर विल बी नो आर्टिकल देयर, विच इज इम्पॉर्टेंट. और ज़्यादातर आपके एग्जाम में लैंग्वेज के साथ आता है ये एरर, जहाँ पर देखा जाता है कि लैंग्वेजेस के साथ, फॉर एग्जाम्पल द मलयालम इज a very sweet language. So it is not the Malayalam. It will be Malayalam is a sweet language, right? It's not the Malayalam. So please be aware of these things. You cannot place articles with these things. So this is the first point. The second point is that we don't use articles when we talk about, basically when it is about kind of, sort of, type of, right, title of, okay, lots of, plenty of, okay, you can say a lot of. See, here article is used but इसके आगे article का इस्तेमाल नहीं होगा. A lot of the, a lot of you cannot use that, right? Also you can say variety of, you can say rank of. So with all these phrases, all these forms, you cannot use article. Basically, if I say, for example, if I say what kind of a singer is he, and I place a question mark, कि कैसा सिंगर है, किस तरह का सिंगर है ये, राइट? सो इफ आई से व्हाट काइंड ऑफ अ सिंगर इज ही, नाउ दिस विल बी इनअप्रोप्रिएट. व्हाट आई सेड इज
in place of, in case you're using kind of, sort of, type of, variety of, plenty of, lots of, you use anything. But the point is, after these things, wherein you use these phrases, आप of a नहीं लिख सकते, of an नहीं लिख सकते, of the नहीं लिख सकते आप. So, in this sentence, the correction that we're supposed to make is that we cannot use article a. The simple sentence or the interrogative will be, what kind of singer is he? Appropriate sentence is this. No article is required, right? So, two places wherein we use zero articles are these. Next point is, next place wherein you don't use article is when you talk about primary purpose. Primary purpose. Primary purpose का मतलब आपका मुख्य उद्देश्य, right? For example, if I say हम hospital जाते हैं, hospital जाने का primary purpose क्या है? इलाज, treatment, right? अगर हम किसी सफर कर रहे हैं, we are not well, so हम hospital जाएंगे. School जाने का primary purpose क्या है? पढ़ना, so पढ़ाई करने जाते हैं. For example, temple जाने का primary purpose है to pray. But अगर आप temple किसी को मिलने जा रहे हो, hospital किसी को देखने जा रहे हो, school अपने cousins या अपने siblings को pick करने जा रहे हो, अपने kids को pick करने जा रहे हो, so that is not your primary purpose. Whenever it comes to school, temple, hospital, okay, hospital, also you can say bed, you can take also you have jail which is very common, आपके एग्जाम में बहुत आता है, jail, market. With these things अगर आपको कभी भी दिखता है कि primary purpose है, for example, the injured man was taken to the hospital. I've written a sentence which expresses that the injured man was taken to the hospital. Now, hospital ले जाने का primary purpose है ना, because he was injured. Injured था तो obvious उसके treatment के लिए उसको hospital ले जाया जाएगा. Now, this is primary purpose. And whenever you talk about primary purpose, you cannot use article. So, this is the reason that this sentence, the appropriate sentence होगा, the injured man was taken to hospital. अगर आप सेंटेंस को इस तरह कहते that I went, अगर मैंने लिखा होता I went to the hospital to see my friend. Now this sentence or the use of this article is correct. Why? Because now when you went to the hospital or now when you go to the hospital to see a friend, this is not your primary purpose. So mark this and remember this कि अगर कभी हम किसी भी जगह जा रहे हैं इन सब प्लेसेस में से and we are going there for the primary purpose, जो वहां जाने का बेसिक काम होता है, तो in that case आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है. जबकि अगर आप ऐसी जगह पर किसी और काम के लिए जा रहे हैं, apart from that being your primary purpose, then you're supposed to use a definite article there. Like for example, if I say I go to school to study, I go to school daily, I go to school to study. So you don't write to the school, you write to school. But if you say that my parents come to the school to see my progress card, so that is appropriate because your parents' primary purpose, the parents coming to school, उनका वहाँ पर कोई भी मुख्य उद्देश्य या primary purpose नहीं है वहाँ पर आके पढ़ने का. वो क्यों आ रहे हैं? वो आपका report card देखने आए हैं वहाँ पर, right? तो वो report card देखने आना school आने का primary purpose नहीं होता है. इसीलिए वहाँ पर लिखा जाता है that my parents come to the school or my parents came to the school to see my progress or my report card. I hope this is pretty clear to all of you, right? चलिए. So the next point or next thing wherein we don't use article is जब कभी भी हम man, women, nature इन सब चीजों को comprehensive way में express करते हैं, right? Comprehensive से मतलब क्या है? I'll explain it to you. I'll tell you कि comprehensive का मतलब क्या होगा. Man, we take man, women, life,
death, science, नेचर। अगर कभी मैन, विमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर, इन सबको एक कॉम्प्रीहेंसिव या ब्रॉड वे में आपके सामने दर्शाया जाए या एक्सप्रेस किया जाए, उस केस में हम इन सब के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव या ब्रॉड वे का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मैन इज मॉर्टल, सो यू वोंट राइट द मैन इज मॉर्टल, आप कहेंगे मैन इज मॉर्टल, दैट्स इट। मैन के साथ उस केस में द या आर्टिकल, एनी आर्टिकल, वेदर इंडेफिनिट और वेदर डेफिनिट, ए एंड और द, आप उनमें से कुछ भी नहीं लिखेंगे, राइट। सो मैन इज मॉर्टल विल रिमेन दिस वे, इट कैन नॉट बी द मैन इज मॉर्टल, अ मैन इज मॉर्टल, man is mortal. Also, for example, if I say that women is man's mate, तो अभी फिर से मैं women को क्या कर रही हूं, एक comprehensive, एक broad sense में express कर रही हूं, तो I cannot use article here. I'll write women is man's mate, that's it. So this will go for man, women, life, death, science and nature. So wherein जब इनको ब्रॉड वे में एक्सप्रेस किया जाए या फिर इनको कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में एक्सप्रेस किया जाता है, so no article is used with them. Okay, चलिए let's move on to the next point, the fifth point, the last point, जहां पर हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, whether definite or indefinite। कुछ ऐसे phrases हैं हमारे पास जहां पर हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, like for example you say in fact, you say in detail, you can say in trouble, right? By car, by scooter, by train, by plane, you can write frames like these. So if I write it this way, by, you can express it through in various ways, on foot, on payment, right, in time, by car, by plane, etc. It can be anything. These are important. In doubt, in haste, in trouble. So with these frames, with such frames, you don't use any article. In a haste नहीं होता है, in a trouble नहीं होता है, on a payment नहीं होता है, on a foot नहीं होता है. So these things, in these such phrases, in such type of phrases, you don't use any article. Also we can have in detail, right? We can also use it as write in ink. ये आपके एग्जाम में बहुत बारी आता है. Write in a ink. See, write with a pen is correct. Write with a pen is correct. Mark it. But write in a ink is inappropriate. It will be write in ink. Right? So this is important. So these frames or such frames do not take any article. ऐसे frames के साथ आप articles का इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो ये हमारे बात हुई हमारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की. बेसिकली ये कहाँ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट? एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट. वंस यू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स, यू विल नो कि सेंटेंस को पढ़ते ही आपको समझ आएगा वेर इन यू फाइंड कि यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. बी वेरी कॉशियस ऑफ दीज केसेस. These are important and do practices. We'll see you next time. Okay, and if you like it and if you find it worthy, don't forget to like, share and subscribe, right? So till then, goodbye and thank you.